Python and how we can write a first basic program using this ideally environment. So in any programming language, we have some keywords. We have some keywords and we have some variables. We have some literals. So what are this different? What are the difference between these keywords, variables, and literals? We are just going to understand this concept. In Python language, we try to write a program. So in any language, in any programming language, we try to write a program. And this program is going to convert it into a executable format. Executable format. And this program is going to run on your system. But this is the scenario with the C or the C++ language. But in case of a Java or in case of a .NET, we have a program, but this program is converted into a bytecode. And this bytecode is then again converted into a executable format. And this program is going to run. In this case, we are going to use either the compiler or the interpreter. In this case also, we are going to use the compiler. And at this point, we are going to use Java virtual machine. Java virtual machine. So what is the advantage of this Java virtual machine? What is the advantage of this Java virtual machine, JVM? So this concept is used, this bytecode concept is used just to make the language platform independent. This concept is just used to make the language platform independent. What is the meaning of this platform independence? हमने किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या सिस्टम, ये हमारा एक सिस्टम है, एंड इन दिस सिस्टम we have written some program, but this program is required, this program is going to be executed on a different type of machine. So this is a normal machine that we have. It may be a Windows or a Linux system, but this program is required to be executed on a mobile or any electronic device. So in this case, जो भी program हम यहाँ पर write up कर रहे हैं, this program will be converted into an executable code by using this compiler.
and this program is going to be executed on the same type of machine and in same type of environment. अगर विंडोज एनवायरमेंट है वो विंडोज एनवायरमेंट में ही एग्जीक्यूट होगा, लाइनिक्स एनवायरमेंट है तो लाइनिक्स एनवायरमेंट में ही एग्जीक्यूट होगा. बट आई वांट माय प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंट. तो हमने प्रोग्राम को विंडोज एनवायरमेंट में राइटअप किया है, बट आई वांट टू एग्जीक्यूट इट ऑन अ एंड्रॉयड सिस्टम और अ लाइनिक्स सिस्टम. So in this case, this program is converted into a intermediate language, converted into a intermediate language, that is byte code. And this byte code is now again converted into this executable code according to the machine on which I want to execute. तो इस बाइट कोड को हम इस मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो इन दिस केस वी नीड अ वर्चुअल मशीन हेयर, वर्चुअल मशीन. और ये बाइट कोड अकॉर्डिंगली इस वर्चुअल मशीन के बेस पर अगेन कन्वर्ट होगा इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, और आपका प्रोग्राम इस पर्टिकुलर डिवाइस पर एग्जीक्यूट होता है. So we have written a program on one type of machine, and this program is going to execute on a different type of machine only if that particular machine have the virtual machine installed. So this is in case of a Java, this is a JRE, Java runtime environment, or we can also call it a Java virtual machine. Similarly, in case of a .NET, also we have a .NET virtual machine. And in case of a Python, again, in case of a Python, Python also support the platform independence concept. And in this case, we have PVM, Python virtual machine. तो हम प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे राइट अप कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस program on a Linux environment or a mobile device or any other electronic device, then if that particular device have the Python environment installed on that particular device, हमारा ये program particular machine पर execute होगा. It means Python also support the virtual machine concept. तो Python के केस में भी जो प्रोग्राम आप राइट अप कर रहे हैं, this program is converted into a byte code. This program is converted into a byte code by using this compiler, and this byte code is now passed to the PVM. So this byte code is now converted into a executable code, and accordingly this program is going to run on that particular device. So this is the case now applicable on the Python also. तो ये कंसेप्ट पहले जावा या .NET के साथ था, and Java and .NET are proprietary software, but we need the same type of feature on the free language. So Python is available under open source, and the same type of feature, the feature that are available with the Java and .NET is now also available in the Python. So any program that can be written using a Java or a .NET can also be implemented by using this Python. So Python also support the platform independence concept. And in this case, जो भी program आप write up कर रहे हैं, this program is going to convert it into a byte code by using this compiler. And this byte code is now executed on the particular device by using this Python virtual machine. इस कंसेप्ट में किसी का कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं. हेलो सर. हाँ बोलो. मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में समझा दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा आवाज़ बहुत स्लो आ रही है मेरे पास और समझ नहीं पाए. ठीक है,
यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं किसी भी सी या सी प्लस में, वो प्रोग्राम आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन कोड में, एग्जीक्यूटेबल कोड मीन्स मशीन लैंग्वेज, ये प्रोग्राम मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस कंपाइलर। और कंपाइलर एक ही सिस्टम, एक ही टाइप के सिस्टम के लिए वर्क करता है। अगर यहाँ पे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंपाइलर जो मशीन कोड जनरेट करेगा वो विंडोज सिस्टम के लिए ही करेगा। अगर लाइनक्स का सिस्टम है तो लाइनक्स के सिस्टम के लिए ही करेगा। बट जावा में एक ऐसा कंसेप्ट है कि आपने प्रोग्राम जो लिखा है, इस प्रोग्राम को आप कंपाइलर से बाइट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका विंडोज सिस्टम है, तो विंडोज सिस्टम पे आपने ये बाइट कोड कन्वर्ट कर लिया और ये बाइट कोड मशीन कोड नहीं है। अब ये बाइट कोड लाइनक्स के सिस्टम में अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो लाइनक्स सिस्टम पे आपको वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो अगर रन टाइम एनवायरनमेंट लाइनक्स सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो ये बाइट कोड लाइनक्स सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बाइट कोड लाइनक्स सिस्टम पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। आपने प्रोग्राम कहाँ पे लिखा था? विंडोज सिस्टम पे, और एग्जीक्यूट कहाँ पर हो रहा है? लाइनक्स सिस्टम पे। तो ये बाइट कोड लाइनक्स सिस्टम पे अगर इंस्टॉल करना, एग्जीक्यूट करना है तो इस लाइनक्स के सिस्टम पे वर्चुअल मशीन होना ज़रूरी है। जावा का वर्चुअल मशीन होना ज़रूरी है, तभी वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये फीचर किस में अवेलेबल है? जावा या डॉटनेट में, सी या सी प्लस प्लस के साथ अवेलेबल नहीं था। इसीलिए जावा का प्रोग्राम, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर हो पाया, बिकॉज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। अब जावा या डॉटनेट यूज करना है तो यू हैव टू पे अ लाइसेंस फी, आपको लाइसेंस फी पे करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो इन सभी कंसेप्ट को, सभी फीचर को अलाउ करता हो, बट हमें कोई फी पे करनी ना पड़े। तो पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोई भी फी हमें पे नहीं करनी पड़ती। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। पाइथन या पाइथन से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, सभी लाइब्रेरीज फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो पाइथन में भी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट अवेलेबल है। यहाँ पे भी जो प्रोग्राम हम लिखते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में, इसे हम कंपाइलर को यूज करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये बाइट कोड किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है अगर पाइथन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड हो तो। पाइथन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड हो तो अगर आपने अपने सिस्टम पे कोई प्रोग्राम लिखा है तो आप अपने मोबाइल पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो जो कंपाइलर हम देखेंगे अपने सिस्टम के लिए, सेम ऐसा ही एक कंपाइलर आपके मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर पायरॉइड नाम का पाइथन का कंपाइलर है, वो मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो प्रोग्राम आप मोबाइल पे टेस्ट कर लेंगे वो आपके सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो थैंक यू सर। पाया? यस सर, थैंक यू सर। तो ये कंसेप्ट पाइथन का है। पाइथन आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कंसेप्ट को अलाउ करता है। पाइथन में भी जो कोड बनते हैं ये बाइट कोड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एंड दिस कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन अ सिस्टम बाय यूजिंग दिस पाइथन वर्चुअल machine. So this program is converted into a bytecode by using this compiler, and this bytecode is going to execute on a system by using the interpreter. So at this point, program to the bytecode is converted by the compiler, and bytecode to the executable code is converted by using this interpreter concept. I hope you all are aware of what is the difference between the compiler
and the interpreter. Compiler is going to convert the complete program in a single go, but an interpreter is going to convert a line by line instruction into a executable code. So this is what is the concept of platform independence that is supported by the Python. Next is what is the variable and literal. हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस? Any programming language is used to handle a different type of data. So what are the different type of data that can we have? This is the data. This is the data. This is the data. And this is the data. So these are the different type of data that we can have. So this is a set of numbers. This is a set of characters. This is also a set of alphanumeric data. Alpha numeric data. So this is only alphabets. So we can have alphabets. We can have a set of digits or a symbol or a numbers. Or we have a set of numerical numbers only. So these are the different type of data that we can have. So in case of Python, this two type of category is handled by using the string data type. These two categories come under a string and this comes under a number. तो अगर केवल डिजिट्स या डॉट सिंबल है तो वो नंबर कैटेगरी में है. Alphabet, a set of digits and alphabets comes under a string. So these are the two categories of data that we have to handle. So this is also called a literals. This is also called a literals, the value that we are going to handle in a program. So whenever we want to store a name for further processing, we store it in a name. Suppose this N is this Ajay Verma. हम N में इस अजय वर्मा को स्टोर करना चाहते हैं या फिर B equal to 56780 or C equal to 27.38. So this is a data that we have stored in the named location. तो ये डाटा है और इस डाटा को हमने इस नेम्ड लोकेशन में स्टोर किया है. So this named location is called a variable name and this data is called a literal. So variables store the literals. Variables store a literals and this literals can be modified during the execution of program.
So variable, the location where we are going to store this literals. Literal is the actual data that we are going to handle. And this literals can be a string, can be a number. So it comes under a two different categories. तो देर इज फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ द नंबर डाटा. नंबर को भी हम इंटेजर और फ्लोट में डिवाइड कर सकते हैं. तो लिटरल्स की कितनी कैटेगरीज हैं, उसमें कौन कौन से सिंबल्स अलाउड हैं, ये हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे.